जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. What's trending? News at 5, powered by Oil India Limited, in association with Everyday Spices, Accoland Amusement Park, Annapurna Foods, Junior Holics, and Biss Farm Biscuits. Signs of bigger conspiracy. New angles come to fore in Batadrava arson case. From drug peddlers to habitual offenders, all were part of mob that gathered outside police station, says Assam DGP. Prime Minister Narendra Modi's massive Indian community outreach in Japan. Prime Minister Modi pitches of Atmanirbhar Bharat for stabilizing global supply chain. Row over collapse of dome of under construction Meghalaya Assembly. Congress demands independent probe into incident. And Assam flood situation continues to be grim. Over 7 lakh people still affected in 22 districts. Death toll due to floods and landslides rises to 24. Hello and welcome to Northeast Live. I am Pooja and we begin the bulletin with the updates related to the Batadrava arson case in Assam. Well, signs of bigger conspiracy and new twists and turns are coming to the fore in Batadrava arson case. As per fresh inputs, even drug peddlers and habitual offenders and criminals seem to have been a part of the mob that gathered outside police station and resorted to arson. More sensational video footage have come to the fore from the Batadrava incident. The new video footages indicate that it was not just a Joshanara and a Shabina who poured petrol, but almost all people were seen carrying bottles filled with petrol. It was in fact a planned motive to set the Batadrava police station completely ablaze. Well, take a look at the dramatic visuals from the incident. Meanwhile, video footages also show the few persons were also seen instigating the mob. Even bottles of petrol were seen being distributed to the mob before the Batadrava police station was set ablaze.
And in a big development, the Assam police has recovered arms from the residence of Iman Ali, one of the attackers in the Batadrava case. As per reports, the police seized a 9mm pistol and 4 rounds of live ammunition. On the other hand, the police has also nabbed a drug peddler identified as Mujibur Rahman for his involvement in the Batadrava violence. Besides, cash worth rupees 6,500 illegal tablets have also been seized. On the other hand, a team of forensic officials arrived in the ravaged premises of the Batadrava police station to collect samples. Meanwhile, the involvement of criminals in the Batadrava arson case has also been exposed. DGP Bhaskar Jyoti Mohanto said that many accused in robbery cases were present at the spot when the Batadrava police station was set on fire. Investigations indicate that habitual offenders had joined the mob with the sole motive of destroying documents related to different cases registered against them. Well, DGP Mohanto said that 2 dacoits identified as Anwar and Alauddin were spotted in the mob. Well, meanwhile, it has also come to light that files related to different cases were first set ablaze. আমি বহুত ভিডিও কিছুমান ষ্টাডি কৰি আছো তাত যিখিনাই লক্ষ্য কৰা গৈছে যে তাত এলিমেণ্টছ অফ প্ৰিপেৰেশ্যনছ তাত প্ৰস্তুতি এটা আছে এনে হঠাতে মানুহ কিছুমান উত্তেজিত হৈ পেলাই আহি পেলাই হেঁচা মাৰি ধৰাহি নাই তাত প্লেনিং এটা আছে তাত মবিলাইজেশ্যনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে মানুহ অৰ্গেনাইজ কৰে গতিকে এইটো এই যিকোনো সাধাৰণ নদাই ভদাই কৰিব পৰা কাম নহয় তাৰমানে এইটো এটা অৰ্গেনাইজ চিষ্টেমেটিক এটা প্লেনিঙৰ সৈতে কৰা পাব্লিকবোৰৰ মাজত আমি কিছুমান মুখ আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ তাত ড্ৰাগ এডিক্টেই নহয় ড্ৰাগৰ ট্ৰেডিং কৰা এখন বিশেষ মুখে আমাক ইণ্টাৰেষ্টটো বঢ়াইছে তাৰ নাম আনোৱাৰ আৰু এটা ডকাইত নন ডকাইত পাব্লিকৰ মাজত আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ তাৰ নামটো আলাউদ্দিন আৰু নিশ্চয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগ ডিলাৰ্ছ বা বেড কেৰেক্টাৰ্ছ ডকাইত তেওঁলোকৰ বহুত নথিপত্ৰ থানাত আছিলে এই নথিপত্ৰ জ্বলোৱাটোৰ এটা তেওঁলোকৰ নিশ্চয় উদ্দেশ্যও আছে Well, videos shot on Sunday when the Batadrava police station was set ablaze clearly shows that a drug dealer identified as Lalu pelting stones at the police station. However, the offender is absconding. And another key accused in the case, Joshanara Begum, is still on the run. It may be mentioned that the accused has set the police station on fire after another lady, identified as a Shabina Khatun, had sprayed kerosene before ignition. The Assam Congress has demanded that a sitting judge of Guwahati High Court, Batadrava, must investigate the Batadrava case thoroughly. Well, the working president of APCC, Rana Goswami, said that death of a man in custody and the consequent violence are both condemnable offences, and it is imperative for all perpetrators involved to be punished. इसमें 2 पार्ट है एक पार्ट की पुलिस का जिम्मा में रहने वाला एक आदमी को यहाँ मौत हो गया था पुलिस का जिम्मा में रहने वाला जो भी आसामी हो साइड हो गुनाहगार हो ना गुनाहगार हो उसको मर जाना तो कोई इसको कभी ग्रहणयोग्य नहीं होता है साथ साथ में ऐसे एक सरकारी जो प्रॉपर्टी को
इसको जितना कागजात है, सरकारी कागजात है, उसको जलाने के इससे कार्रवाई करना का भी मतलब कोई समर्थन योग्य नहीं है। कोई भी हालत में किसी क्रिमिनल को, किसी गुनहगार को हम लोग बसाने नहीं चाहते। उसको जो कार्रवाई होगा, आईनी प्रक्रिया से जो सजाए देगा, जो राय देगा, उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान करेगा। लेकिन साथ साथ में हम लोग ये भी दावा करता हूँ, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, उसको निकालने के लिए कम से कम गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज देके उसको इंक्वायरी होना चाहिए। और जो चाहे इस घटना को दूध का दूध पानी का पानी जो घटना निकाल जाए। Further, the Congress leader also slammed Assam Police as well as the Intelligence Bureau for failing to prevent the violence despite suspecting a jihadi angle. पुलिस का जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, उसका कम से कम जो हमारे इंटेलिजेंस है, सुरंगसुआ है, इंटेलिजेंस को कम से कम थोड़ा तेज होना चाहिए। जो लोग कह रहा है कि जो हमारे यहाँ जिहादी है, ये है, कम से कम अगर जिहादी है तो वो लोग तो पहले ही क्यों मालूम नहीं पड़ा, इस घटना का बाद क्यों मालूम पड़ा? तो इंटेलिजेंस फेल है, कंप्लीट असम गवर्नमेंट का, होम डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस फेल है। जिस तरह वो लोग बोल रहे हैं जिहादी है, ठीक है, जिहादी है तो पकड़ो, ये तो कोई उसको कांग्रेस पार्टी कोई समर्थन देने वाला चीज नहीं है। कोई पॉलिटिकल कलर देने का कांग्रेस पार्टी नहीं चाहता। अगर पॉलिटिकल कलर देने चाहता तो हम लोग आके इसी हिसाब से बात नहीं करता। लेकिन क्या पॉलिटिकल कौन कर रहा है? इसमें थर्ड पार्टी है कि फोर्थ पार्टी है? मैं तो कहता हूँ यहाँ पे फोर्थ पार्टी भी है, इसमें 5 पार्टी भी है। इसमें कितना कौन है उसमें निकल जाएगा। कम से कम साहस है तो आप लोग उच्च न्यायालय का, हमारा हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज देके इंक्वायरी कराई। मैं तो कहता हूँ ना, मैं सोचता हूँ पहले यहाँ के अभी देखा सुना था गुजरात मॉडल आया, लेकिन गुजरात मॉडल नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मॉडल लाया है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं दोबारा बोलता, बार बार बोलता हूं, असम गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता, दावा करता हूं कांग्रेस पार्टी का तरफ से, गुवाहाटी हाई कोर्ट का सिटिंग जज देके इंक्वायरी कराए, सारा चीज बाहर निकाल के उभर आएंगे। On the other hand, Assam Cabinet Minister Piyush Hazarika reiterated that all perpetrators involved in the case will be punished strictly. যদি কোনোবা মানুহ পুলিচ কাষ্টডিত ঢুকাইছে বুলি, থানাত ঢুকাইছে বুলি যদি এলিগেশ্যন দিছে, তাৰ এগেইনষ্টত আমি কি কৰিম? এনকুৱাৰী কৰিম। কিন্তু তাৰ কাৰণেতো কোনোবাই থানাখন গৈ আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব। থানাখন এনেকৈ মেচ মাৰি অন কেমেৰা, অন টিভি ৰিপৰ্টাৰৰ আগত এনেকৈ জ্বলাই দিব, বাইক জ্বলাই দিব, হাউচ জ্বলাই দিব, ফাইল জ্বলাই দিব, ঘৰ জ্বলাই দিব, এইটোতো মানি ল'ব নোৱাৰো। আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'মেই, তাৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম। কংগ্ৰেছে যিমান চিঞৰ বাখৰ নকৰক আমি ভয় নাখাওঁ। যিমান কংগ্ৰেছে অসমীয়াক মাৰি থাকে মাৰি থাকক, অসমীয়াক মাৰি থাকে মাৰি থাকক, অসমীয়াৰ বিপক্ষে চিঞৰি থাকক, কিন্তু আমি অসমীয়াৰ হৈ অসমৰ হৈ কাম কৰিম। With that, we take a short break. Stay tuned for more news. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Oh, বাহ! Oh, বাহ! অপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য। ডাউনলোড মিশো। What's trending? Who are the biggest newsmakers of the day? What are the issues affecting people? Center hand once again extended. Are you ready to agitate? नॉर्थ लाइव सभी को मेरा शुक्रिया। Watch Evening Prime every day at 7 p.m. only on Northeast Live.
Welcome back and on to Meghalaya now. Well, the state Congress has demanded an independent inquiry into the collapse of the dome of under construction Meghalaya Assembly building. Meghalaya Pradesh Congress Committee Working President PMCM, along with former Minister Debora Marak, expressed concern over the incident, stating that people's lives could have been at risk. It is not only for the Congress party, but for the state as it is, to see that the dome of the Legislative Assembly building has been collapsed. Let us look at the background right from the day one when the tender has been allotted. I would like to remind all of you that after the tender has been called, we understand that the tender fix is 145 crores. But we fail to understand that the UP-based company, RNN Limited, has quoted it at 127 crore, a difference by 18 crores. We also understand that the BRC company, the BRC Limited, has also participated in the tender process. But it has been rejected because of the inexperience in construction of dome. But it is very conflicting to see that the company that has been rejected because of inexperience for the construction of dome has been allowed as a subcontract. That is very conflict. So the question is how the company that has been participated in the tendering process, which has been rejected, but still considered allowed to go as a subcontract of the UP-based company RNN Limited. The Congress Party, we want to see that the state government should constitute an inquiry. It will be good if the central agency will come to inquire on all this huge amount, so that anyone who is involved in this very particular project should be punished. It is really embarrassment for all activities. Now we also, from the party side, MPCC, we are really concerned about it. Now from the party MPCC, we demand independent inquiry into it. Then only we will know exactly what happened to it, how it collapsed. Now 2 weeks rain, because of rain only it collapsed. And they said it is according to seismic prevention. And considering all these things, they are building this big, massive assembly building. But how come it collapsed only for 2 weeks rainwater? On to Arunachal Pradesh now. Well, the elections for the various posts of All Arunachal Pradesh Students' Union has been action-packed and even controversial, with violence being witnessed during the polling process. Has there been any outside factor trying to affect the polls to an extent? Why such widespread violence this time? Well, could the polls have been handled in a much better way? Our Itanagar correspondent Meme Mangfi caught up with APSU General Secretary Tobom Dai to get answers to some of these questions. Let's listen in. Well, we have Mr. Tobom with us right now, who is the outgoing General Secretary and a caretaker of APSU as of now. Mr. Dai, let's get started with this election, APSU election 2022. What is the status now? We've been informed that you were right inside the premise, attending a crucial meeting. The election, as all of you are seeing, that it has been a fun, festive, and also there have been certain events of violence also. But overall, it's still going on, and there's a stalemate here. There is a bit of a problem for certain districts, 2 districts right now on the delegations. But the election commission and outgoing team is working on it, and we're hopeful that something concrete will come out from that. Okay, Mr. Dai, what do you think that, what might have gone wrong this time in this APSU election 2022? As we can see that, lots of severe violence happening this time, and moreover, the election this time is taking too long.
Uh, the violence, I think it has been because of the. I must admit also because there have been certain shortcomings from the our team also in the registration process, and it has been is corrected now. So most of the things are resolved. But as I said earlier, only now 2 districts are there, and it's been pending, and we are seeing into that. And in student elections, there are, such things usually happens. But you have to see the brighter side of also that lots of maximum students from different corners of the state has converged here and have exchanged their ideas. We have seen that there it was kind of an festive atmosphere here. It's like a carnival, and then also there was the other side of that. So we can take it on average that the election process will be somehow will culminate and the APSU will get new leaders. Now, talking about this APSU election 2022, every student of the state have got their own right to choose their leader and cast vote. So we got to hear some, information through some sources that, how true is that? I don't know, but, that some group held a meeting with the district student union of TCL region at Dimapur regarding to choose the right leader who thinks for the welfare of the TCL region. How far is this how far is this news true? And then don't you think some outfits from other state are influencing the student politics of Arunachal? The news and the subject is already in the public domain, and it has been widely covered in the local media last time that the district students unions of our TCL region were called up at Hebron. It came Hebron at Dimapur, and where I think when I spoke to them, many of the leaders who were here were participating in the APSU election. I spoke to them about their meeting. What they told me is that it was a general discussion. They were just telling that other subjects were also there, and then APSU regarding the leadership also was there. That they were telling that new leaders of that you should choose new leaders who will work for the TCL region. So that was what they told me. And if there is we are also hearing that they have been very they are involving in the APSU election process, and if that's happening, it's a very sorry state of affairs. And I believe that organizations like undergone the UG groups or the organizations like NATION, I think they won't be participating in the APSU. They won't be coaching the students of the TCL region to elect certain leaders. I don't believe that, but if that happens, it will be a curse for the student movement in the state. And I also believe that the student community of the state who have been participating, who have took part in this election, will surely not elect a leader who isn't backed by a certain organizations from outside. With that, we take a short break. Stay tuned for more news. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Salmonella. Absent. Perfect attendance. নিমৰ শক্তি ভৰা নিমাইলে আঁতৰাই 100টা বেমাৰ বিয়পোৱা বীজাণু নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ What's trending? Who are the biggest newsmakers of the day? What are the issues affecting people? Center, hand once again extended. Are you ready to agitate? Notice live सभी को मेरा शुक्रिया. Watch Evening Prime every day at 7 p.m.
only on Northeast Live. कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया. All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? Welcome back, and before moving to some other stories, let's take a look at the headlines once again. Signs of bigger conspiracy, new angles come to the fore in Batadrava arson case. From drug peddlers to habitual offenders, all were part of mob that gathered outside police station, says Assam DGP. Prime Minister Narendra Modi's massive Indian community outreach in Japan. Prime Minister Modi pitches of Atmanirbhar Bharat for stabilizing global supply chain. Row over collapse of dome of under construction Meghalaya Assembly. Congress demands independent probe into incident. And Assam flood situation continues to be grim. Over 7 lakh people still affected in 22 districts. Death toll due to floods and landslides rises to 24. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has accused Congress leader Rahul Gandhi of encouraging separatist elements by describing India as an union of states. Chief Minister Sharma said that the Gandhi family considers itself above the nation, but Rahul Gandhi has gone a step ahead in breaking the country in the name of federalism. The Assam Chief Minister also wondered as to what will happen to the 5,000 years old rich history of India if India is a union of states. Not only this, Himanta Biswa Sharma also sought to know as to what does Rahul Gandhi means by terming India as an union of states when the grand old party calls itself the Indian National Congress. काल भी मैंने एक देखा कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट. तो मेरा 5000 साल का संस्कृति कहां गया? अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दैट मींस यू आर डिस्प्यूटिंग एवरीथिंग इंडिया हैज. अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट ही था तो गोपीनाथ बरदलोई जी को क्या आपत्ति था कि मुझको पाकिस्तान दिया गया था, मैं पाकिस्तान में ही चला जाता था. लेकिन असम का लोगों ने लड़ा कि मुझको पाकिस्तान नहीं जाना है, हमको भारत में रहना है, इसलिए भारत मेरा आत्मा है. अगर बोलते नहीं नहीं ये एक एग्रीमेंट कर दिया, अभी राहुल गांधी ऐसा समझा रहा है लोगों को जैसे आपका और मेरा बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था. भाई स्वाधीनता का पहले जब गांधी जी को सारा देशवासी ने अपना लीडर समझा तो अब क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था क्या गांधी जी का साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम हुआ, भारतीय जातीय कांग्रेस हुआ, हर जगह में आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, तब क्या कोई यूनियन ऑफ स्टेट का कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? तो ये राहुल गांधी का अभी पता नहीं और कौन एडवाइजर अभी सामने लगा है. तो कंट्री को तोड़ने का ये यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है? बोला आपने निगोशिएट किया भारत में आने में, मतलब अगर आप निगोशिएट किया तो यू कैन डी निगोशिएट ऑल्सो टू गो बैक. मतलब इनडायरेक्टली ही इज एनकरेजिंग ए सेसेशनिस्ट एलिमेंट. 5000 साल रामायण, महाभारत, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, लासित बरफुकन, शिवाजी, ये कहां गया ये सारे सब? बट मैं उनको दोष नहीं दूंगा. कोई जेएनयू का कोई ट्यूशन लगाया गया, शायद वही उनको सिखा दिया. इसलिए उनको अगर लाके आप पूछताछ करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, भाई अमेरिका का फेडरलिज्म और इंडिया का फेडरलिज्म का देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. इंडिया वाज कल्चरली वन नेशन फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग. तो आप ऐसे कोई आके एग्रीमेंट करके भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया, वो नहीं होता है. लेकिन उनका मजबूरी है, उनको जो सिखाएगा वही वो बोलेगा. टोटे और उससे ज्यादा क्या बोल सकते.
On the other hand, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has once again backed his move to dissolve all government-run madrasas and convert them into general educational institutions. While speaking at an event in the national capital, Chief Minister Sharma said madrasas should cease to exist, while he emphasized on imparting general education for all. Not only this, the Assam Chief Minister also pointed out that children are being admitted to madrasas. The Assam Chief Minister reiterated that as long as the word madrasa exists, children can never think about becoming doctors and engineers. Chief Minister Himanta Biswa Sharma advised that children must be taught Quran only at home. Besides replying to a question that students in madrasas are extremely talented and can memorize every word of Quran easily, Chief Minister Himanta Biswa Sharma said that all Muslims were Hindus and no one was born Muslim in India. Well, Sharma added that if a Muslim child is extremely meritorious, then he would give partial credit to his or her Hindu past. आपके स्टेट में जो 36% मुस्लिम आबादी है उसके लिए जो उनके मदरसाज हैं उनको जो मॉडर्नाइज आपने किया है और उनको आप चाहते हैं कि वो साइंस भी पढ़ें दीन भी पढ़ें, ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। मैं इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। यूजुअली दे आर वेरी हैप्पी। कल उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दिया, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई कैन डन इट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। आम मुसलमान वहाँ का 50% खुश है, 50% भी बेशक ढक्कन कसा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। और बस ये बता दीजिए कि उनको क्या यूनिवर्सिटी तक जो है उनका रास्ता बनाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये बड़े मदरसे के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, कुरान जैसी किताब को कंठस्थ कर लेते हैं, एक एक शब्द बिल्कुल ठीक। इनको हमें सही रास्ते पे डालिए। भाई साहब, ये मदरसा सब भी विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2-3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब, और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, I will also give a part of credit to his Hindu past. कि आपके स्टेट All right, so there is Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, who has once again backed his move to dissolve all government-run madrasas and convert them into general educational institutions. And while he was speaking at an event in the national capital, where Chief Minister Himanta Biswa Sharma said that madrasas should cease to exist, while he emphasized on imparting general education for all. Not only this, the Assam Chief Minister also pointed out that children are being admitted to madrasas. The Assam Chief Minister reiterated that as long as the word madrasa exists, children can never think about becoming doctors and engineers. And on to the flood updates now. Well, Dima Hasao is slowly recovering from the damages inflicted by floods and landslides. While the government has ensured that nothing falls short in dealing with the crisis, the affected people are still in a state of panic
and uncertainty regarding the future. Our colleague Swadeep Hasamsar, despite all odds, travelled to Gilgal village adjacent to Molhoy in Haflong, where nature's fury has left a trail of devastation. Around 65 houses were damaged during the calamity, forcing residents of Gilgal village to vacate their homes. Although there is a let-up in the weather conditions, the Gilgal residents are apprehensive that they will lose their land and houses in no time. Visuals also clearly showed that the houses in Gilgal are in a precarious condition. Let's have a look at this ground coverage by our Dima Hasao correspondent, Swadeep Hasamsar. अभी क्या कर रहे हैं, कैसे करा, और ये सब जो घर है हम लोग देखा, जो सब आदमी बैंक लोन क्या क्या करके, तो उन लोग को क्या होगा अभी, अब क्या सोच रहे हैं अभी? क्या बोलेगा, हम भी ये सोचता है, कोई तो बैंक लोन से लेके घर बनाया है और कोई तो क्या क्या करके बिजनेस करके भी बनाया है, लेकिन सब तो घर तो इधर का सपोज गिलगल में तो 160-70 प्लस तो चला गया। दूसरा जगह में भी कितना तो घर सब चला गया, आधा आधी बोलो ऐसे चला गया। तो कैसे करेगा, इसमें तो हम लोग का सरकार देखता होने से तो वो लोग देखने से तो मदद तो मिल जाएगा। तो अभी भी क्या हालत है, हम लोग तो कुछ हम लोग का मांग है, मैंने हम जो दिल का बात बोलेगा, एक ठो जहाँ 1,50,00,000 एक घर में देने से भी तो कुछ इधर में घर बनाने का लाभ नहीं है। इसका बदली में सेंट्रल गवर्नमेंट से जगह जमीन देने से सेफ्टी भी होगा, और जितना आदमी लोग जहाँ में रहेगा, मेरे साथ में भी पैसा अगर होने से भी घर इधर में तो और बनाने का हिम्मत नहीं है, कोई बनाने नहीं सकेगा। हम लोग का जो है, हम लोग का तकलीफ है जो लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है, यहाँ पे 103 घर है, तो बहुत तकलीफ भी मिल रहा है। अभी रहने के लिए घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। अभी तो यहाँ पे स्कूल में हम लोग पढ़ा हुआ है यहाँ पे, और खाना पीना तो मिलता है, अब आज तक तो मिलता है, लेकिन आगे कल परसों आगे कैसा जाएगा, कैसा पढ़ाएगा बच्चा लोग भी, कैसा पढ़ाना है, हम लोग भी कैसा दिन गुजारना है, तो आज तक तो हम लोग सच में भी सोचने में नहीं सकता है। इसलिए हम लोग का मांग है जो सरकार से जमीन हम लोग के लिए कुछ ना कुछ तो देगा, और हम लोग का रहने के लिए घर भी दे देगा। लेकिन जमीन अगर दिया भी है, लेकिन बनाने के लिए भी तो कुछ पैसा का जरूरी होगा, वो भी हम लोग का मांग है। सरकार से हम लोग को देने के लिए हम लोग मांगता है। डिमा हासाओं में लगातार बारिश होने का वजह से बहुत सारा जो है घर जो है बेघर हो गया है। उसके साथ साथ बहुत जगह में भूमिस्खलन होके बहुत लोगों का घर जो है तोड़ दिया गया। उसके साथ इस वक्त हम मौजूद है मोलोई में। डिमा हासाओ का एक मोलोई एक ऐसा जहाँ टाउन है जहाँ मिनी हाफलोंग भी कहा जाता है। तो ठीक वैसा ही मैं इस वक्त जहाँ मैं खड़ा है वहाँ पर गिलगल एक गांव है, मोलोई के अंदर में आते हैं। यहाँ का जो मोलोई एरिया में मोर देन 100 प्लस घर बेघर हो चुका है, मट्टी की जमीन पर दब चुका है, किसी का लैंडस्लाइड हो गया है, किसी का घर टूट गया है। वैसा ही यहाँ पर अभी इन लोगों का जो भविष्य क्या होगा अभी सवाल हो गया है। जो 100 से भी ज्यादा घर जो है डैमेज हो गया है, खराब हो गए। अभी वहां पर फिर से अगर सरकार की तरफ से भी अगर मदद करते भी है या पर वो फिर से घर बनाना भी चाहे तो वहां पर घर जो है बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जमीन एक हिली एरिया है और उस हिल जो है हिल गया है, और यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करने का भी सोचते हैं भी है तो फिर भी बहुत ही तकलीफ से या फिर रिकंस्ट्रक्शन होगा और करना भी यहाँ पर मुश्किल होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इन लोगों का जो है रहना मुश्किल हो गया है, रह ही नहीं सकता है यहाँ पे, इन लोगों का फ्यूचर नहीं है। तो उन लोगों का कहना ये भी है कि कोई दूसरी जगह पे रिप्लेसमेंट या फिर कुछ ऐसा प्लॉट या फिर कुछ ऐसा एरिया बना के सरकार की तरफ से अगर दे तो बहुत ही इन लोगों का जो है यहाँ पे जो है जो बेघर हो गया, जिसके घर खराब हो गए, उन सभी का बहुत ही फायदेमंद होगा। And on to the big national focus now. The BJP government has made Indian democracy strong and resilient in the last 8 years, Prime Minister Narendra Modi said in his address to the Indian diaspora in Japan. The Prime Minister is in Tokyo for the Quad Summit.
In an address to the Indian community in Tokyo, Prime Minister Modi said that in the last 8 years, the Indian democracy has been made strong and resilient. It is serving as one of the strongest pillars of progress. And I quote, "We are working towards building a system that is not only inclusive, but caters to a leak-proof governance to fulfill the aspirations of every citizen," unquote, Prime Minister Modi said. इस बार जब मैं जापान आया हूं, तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है। ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। With that, we take a short break. Stay tuned for more news. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Oh, bah! Oh, bah! অপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য। ডাউনলোড মিশো। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. What's trending? Who are the biggest newsmakers of the day? What are the issues affecting people? Center hand once again extended. Are you ready to agitate? नॉर्थ लाइव सभी को मेरा शुक्रिया। Watch Evening Prime every day at 7 p.m. Welcome back.
Well, today was the last day of nomination filing for the ensuing Karbi Anglong Autonomous Council polls. Candidates of the ruling BJP as well as the Congress, Aam Aadmi Party and other independent candidates were seen in the district commissioner's office since morning today to file their nomination papers. Well, cabinet ministers Piyush Hazarika and Jogen Mohan and KAAC CEM Tuliram Rongkhang, among others, accompanied BJP candidates. Hazarika, while speaking to the media, exuded confidence that BJP will be sealing victory in all 26 seats. বিজেপি টিকটত ইলেকশন খেলিব কিয় খুজিছে বিজেপিৰ অৱস্থা ভাল আমি ইলেকশন খেলি খেলি এখিনি আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স হৈছে যে যেতিয়া ক্যান্ডিডেটে বেছিকে টিকট বিচাৰে যেটো পাৰ্টিৰ পৰা ক্যান্ডিডেটে বেছিকে টিকট বিচাৰে মানে হে পাৰ্টিটো মজবুত হে পাৰ্টিটো ইলেকশন জিকিব বুলি মানুহে ভাবে আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইলেকশন খেলিম বুলি ভাবে আৰু ৰাইজক সহায় কৰিম বুলি ভাবে কিন্তু সকলোকে টিকট দিব পৰা নাযায় 26টা সমষ্টি 26 জনকে টিকট দিব পৰা যায় গতিকে যিসকলে ইলেকশনত টিকট পোৱা নাই বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কেতিয়াও দলৰ অন্যায় নকৰে মই বিজেপি দলত দুবাৰ জিকিলো বিজেপি দলৰ পৰা দুবাৰ ইলেকশন জিকিলো গতিকে মই এটা বস্তু দেখিছো বিজেপি দলৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তাই টিকট নাপায় মই বঞ্চিত হোৱা বুলি নকওঁ টিকট নাপায় তেওঁলোকে কেতিয়াও দলটোৰ ক্ষতি নকৰে মই দৃঢ় বিশ্বাসী গতিকে ইয়াতো এটা ব্যতিক্ৰম নহব কাৰ্বি আংলঙত এটা ব্যতিক্ৰম নহব 26 out of 26 we are going to win. Meanwhile, disapproving rumors of infighting within the BJP over non-allotment of tickets, KAAC CEM Rongkhang said that all members of the party are on the same page and BJP will emerge victorious. সমষ্টিত নহয় 26টা সমষ্টি আছে কাৰ্বি আংলং আৰু বেছ কাৰ্বি আংলং 26টা সমষ্টিত বিপুল ভোটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিকি আহিব জয়যুক্ত কৰি আহিব নাই নাই সবে টিকেট যিটো দাবী কৰাটো সবে অধিকাৰ আছে গতিকে যিবিলাকৰ টিকেট দাবীদাৰ তেখেতসকলতো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত কাম কৰিছে কোনো মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই কোনো নাই বিহম্বাদ আপোনালোকে দেখিছে নেকি আজি তাৰিখলৈ কোনো বিহম্বাদ নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা ডিসিপ্লিনৰ মানে ৰাজনীতি দল গতিকে আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলঙৰ হে 5টা বছৰত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলিপ্ৰীতি আমি কাৰ্বি আংলং শান্তি বুজাই ৰাখিছে কাৰ্বি আংলং এটা উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ আগবাঢ়িছে গতিকে ৰাইজে দেখা পাইছে কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি হৈছে শান্তি হোৱাৰ লগে উন্নয়নমূলক কামবিলাক আগবাঢ়া দেখা পাইছে গতিকে ৰাইজে আগন্তুক কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰা হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো মই আজি তাৰিখলৈকে দেখা নাই Whereas Minister Jogen Mohan said that there are no rivals for the BJP in the KAAC polls, adding that the Congress and other parties were fighting the polls to only keep the spirit of elections intact. প্ৰতিদ্বন্দ্বিতালৈ নাহিবই মই দেখিছো ইয়াতে একেবাৰে শেষলৈ আহিব লাষ্টত থাকিব তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি হয়তো ৰয় নৰয় তেনেকুৱা এটা ইংগিত দেখিছো কাৰণ বাকি প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ সমৰ্থকে 2-4 জনৰ বাদে বেলেগ নাই আৰু আমি আমাৰ যিসকল উলহ মালহেৰে যেনে ধৰণে ধুমধামেৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে ইয়াতে যি মোলাবাহে দুপাততে নিচিনা আজি নমিনেশ্যন দিয়া দিনাই ৰিজাল্টটো প্ৰায় ওলাই গৈছে ইয়াত ডিপুট আজি 10 জন প্ৰাৰ্থী নমিনেশ্যন হ'ব 10 জনে জিকিব 100% আৰু আমি এবাৰ নতুন কৰ্মোদ্যোগী জনসমৰ্থন থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিকা ভৱমূৰ্তি প্ৰাৰ্থী আমি কেইবাজনো ইয়াতে দিছো উঠি অহা প্ৰজন্মক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে দলে এইবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছে আমি নতুন প্ৰাৰ্থীও দিছো পুৰণা প্ৰাৰ্থীয়ে মিলি সুন্দৰকৈ কামখিনি আগবাঢ়ি যাব লাগে উন্নয়ন আগবাঢ়িব লাগে ঢল বব লাগে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত পাহাৰীয়া 26টা 100% জিকিব যোৱাবাৰ 24টা জিকিছে এতিয়া ইমান উন্নয়ন কৰাৰ পাছত আৰু দুটাটো জিকিব আৰু বাকি যোৱাৰ ডিফাৰেন্স আৰু বহুত বাঢ়িব এবাৰ আমাৰ Well, BJP candidates also exuded confidence after filing nomination papers. যোৱা 5 বছৰ কাৰ্যকাল আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মানে ভাল মতে কাম কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ মানে আঁচনি গৈ পোৱাৰ কাৰণে আজি পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি 26টা সমষ্টি যিটো আমি জিকাই আনিব সেইটো আমি খাটাং যিখিনি বড়ো সংগঠন আছে সকলো সংগঠনক মোৰ লগত সমৰ্থন কৰি আজি নমিনেশ্যন দিয়াত তেওঁলোকে আহিছে আপোনালোকে মানে ওচৰতে আছে সকলোখিনি গতিকে মই আশা ৰাখিছো তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা বিজেপিৰ মানে সহযোগত লাংহিন 13 নং লাংহিন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্ভীক জিকি যাব মানে কোন আশা কৰি আছে
However, the Congress has said that people will vote for candidates and not for a particular party. প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত এটা কথা আছে, আমাৰ মেইন হয় আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মানুহবিলাকে চায়, এক নম্বৰ কথা। এতিয়া কেণ্ডিডেটক যদি মানুহবিলাকে চিনি নাপায়, ৰাইজসকলে ভোটাৰ্ছবিলাকে যদি চিনি নাপায়, তেনেহ'লে এইটো প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি কৈও লাভ নাই, এক নম্বৰ কথা। আৰু তেওঁৰ কাৰণে পাৰ্টীসকলে কিমান কৰে বা মোৰ কাৰণে পাৰ্টীসকলে কিমান কৰে, সেই তাৰ ওপৰতে বেছ হ'ব। কিছু জেগাত হ'ব পাৰে, কিন্তু মেক্সিমাম জেগাত নহয় বুলি আমি আশা কৰোঁ। কিয়নো তেওঁলোকে এই 5 বছৰত বা 7 বছৰত যি কাম কৰিলে সেইটো চবেই দেখি আছে। প্ৰাইচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি চব বস্তুৱেই। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ডিফু টাউন ধুনীয়া হৈছে, ঠিকে আছে, সেইটো বেয়া হোৱা নাই বুলি নকওঁ। কিন্তু আল্টিমেটলি আমাৰ ইয়াত কি হৈছে, ষ্ট্ৰীট লাইট দিছে, ৰাতি নজ্বলে। তাৰমানে কি, ইয়াত কাৰাপশ্যন চলি আছে। ৰাস্তাৰ ওপৰত মানে অভাৰলেপিং হৈ আছে কামবোৰ। এটা ৰাস্তাত 2-3বাৰকৈ বিল ওলাইছে, সেই চবটো কাৰাপশ্যনতে গৈ আছে। It may be mentioned here that the BJP is fighting in all 26 seats, while the Congress has fielded candidates in 22 seats. The KAAC polls are scheduled for June 8th. Shifting focus now, in a major success for Assam police, contraband worth rupees 1.5 crore has been seized from the Karimganj district. While acting on specific inputs, a police team launched an operation in Pathar Kandro, Kabariband area. In the operation, as many as 185 grams of heroin found concealed in 15 soap cases have been recovered from a house in the area. Well, 2 persons, namely Hussain Ahmed and Jakaria Ahmed, have been arrested by the police in connection. The police have confirmed the value of drug to be about rupees 1.5 crore in the market. Additional Superintendent of Police of Karimganj, Partha Pratim Das, while interacting with the media, said that the contraband substances were being transported from Mizoram. ASP Das further informed that the miscreants planned to transport some quantity of seized contraband to Bangladesh, while some quantity was meant to be sold in Karimganj. কাবাৰীবান এৰিয়া যোনটো পাঠাকান্দিত পৰে, কালি আমি তাতে এটা অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ। আমি তাতে খবৰ পাইছিলোঁ যে এটা চিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন মতে এটা জেগাত ড্ৰাগ ষ্ট'ৰ কৰি থৈছে। সেইমতে আমি এটা টিম ফৰ্ম কৰিলোঁ। আমাৰ OC পাঠাকান্দি IPS প্ৰবেশনাৰ, তেওঁ তাতে আছিলে শীতল কুমাৰ, আৰু আমাৰ যোনটো এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড আছে সেইটো কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আমি এই গ্ৰুপটো তালৈ গ'লোঁ। গৈ আমি তাতে ছাছপেক্টেড প্লেচ কিছুমান চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰোঁতে আমি তাতে জাকাৰিয়া আহমেদ, তাৰ ঘৰত আমি 15টা চব কেছ পালোঁ, এলং উইথ যোনটো টোটেল যোনটো 185 গ্ৰামছ হৈছে সেইটো, আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট ভেলু এপ্ৰক্সিমেটলি 1.5 ক্ৰ'ৰ হ'ব। আৰু এইটো ছাছপেক্টেড টু বি হিৰইন হয়। আৰু তেওঁৰ লগতে এজন যোনটো জড়িত আছে হুছেইন আহমেদ, তেওঁকো আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এইটো সন্দেহত। এই মালটো আমি ইনিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন গম পাইছোঁ যে চব মিজোৰামৰ পৰা আহিছে। আহি পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান পাৰ্টলি আমাৰ কৰিমগঞ্জতে চেল কৰে, আৰু পাৰ্টলি তাহাঁতি বাংলাদেশৰ ত্ৰিপুৰালৈ চেল কৰে। And on to some sports news now. Well, Haryana emerged successful and registered a 2-0 win over Jharkhand to lift the 12th Hockey India Sub-Junior Women National Championship. The final of the championship, hosted by Manipur Hockey under the aegis of Hockey India, was played at the Hockey Stadium Kumam Lampak in Imphal on Sunday. The opening goal for Haryana came in the 13th minute when Ria capitalized on a fine chance to flick home the ball. The second period of the final match, that was played under floodlights, saw the two sides traded few runs, with Haryana trying to extend the lead and Jharkhand trying to pull level, but lack of finishing touch denied the two sides from adding to their tallies. After the halfway break, Haryana dominated the possession, and after a few unsuccessful attempts, Sejal doubled the lead in 39th minute to make it 2-0 in the third quarter. The scoreline remained unchanged despite Jharkhand putting in diligent effort to reduce the margin, and Haryana eventually emerged the champions of the 25-team tournament. Haryana game. Jersey number 1, Nidhi. Jersey number 11, Kirti. Jersey number 12, Sakshi. Jersey number 13, Riya. Jersey number 14, Sanjana. Jersey number 15, Darshan.
Well, news and updates continue on Northeast Live, so stay tuned for more news. Thank you. What's trending? Who are the biggest newsmakers of the day?